clear? And then I said that climate, then there's SC. Climate is two types, direct climate and indirect climate. And direct climate, if I say that temperature, pressure and humidity, temperature, sorry, pressure, board of precipitation and humidity. Indirect climate is the soil and vegetation. And then I said a stage, and a stage means youth, mature and old, and time is always playing an important role. And topography means slope and relief. Topography means slope and relief. And then I said that gravity is always playing a role. Yes, वो तो हमेशा ही play करते रहता है. Sometimes higher height, sometimes lower height. And then I said there is I said biota, and biota में flora and fauna. Vegetation का important role मैंने बताया. Why the forest is very much important. Why afforestation, reforestation should be there. And thereafter I said that space, process and process, endogenic, exogenic, and then rate of endogenic forces याद हो चुके हैं. देन अब हम लोग केवल देखते चलेंगे और समझते चलेंगे. बहुत कुछ इसमें से हमने डिस्कस किया है. और आपको करना क्या है, आपके 2-3 क्वेश्चन इसमें से आपको क्रिएट करना है. हाउ डू द स्ट्रक्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द व्हाट. यदि बोला जाए यदि द क्वेश्चन कम्स, अब यहां पर लिख लेंगे एक क्वेश्चन जो आपको लिख कर लाना है. डेविस वाला ही लाइन में बोलूंगा, लेकिन आपको 200 वर्ड्स में जस्टिफाई करना है. Landform is a function of structure, process and time. Justify this statement. Maximum 200 words. तो आप 200 वर्ड्स में लिख सकते हैं क्या? आपको लग रहा है मेरे पास तो नॉलेज इससे ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको यू शुड प्ले इन अ वेरी स्मार्ट रोल. डायग्राम्स ज्यादा बनाना, छोटे छोटे, उसमें ज्यादा लिख दो. एंड देन रेस्ट वेयर यू हैव टू राइट लेस. तो आपको चांस मिल जाएगा टू राइटिंग 150 वर्ड्स ओनली. एंड द एग्जामिनर विल बी हैप्पी दैट ही इज एबल टू प्रेजेंट. कितना चतुर है, हाउ मच क्लेवर ही इज. गेटिंग माय पॉइंट? So the word written in the diagram will never be in count. ध्यान में रखेंगे, word written in the diagram representation, it will not be in the count. So when you have written something in the diagram, वो count नहीं होगा. So try to become clever. So we are going to see, like I said, that structure. और जो words हमने देखा है वो यहाँ आएगा. The structure, on the structure various gradational process. जैसे बोला जाता है ग्रेडेशनल एंड डिग्रेडेशनल. ग्रेडेशनल का मतलब होता है ग्रेडेशनल whenever the gradational words comes, it is made up of a gradation, and I said that degradation. इसका मतलब है डिपोजिशन या इंक्रीज करना किसी लैंडफॉर्म को, and degradation means decrease करना. So gradational includes a gradation and degradation. So I said that the structure, on the structure, first we are discussing a structure. On the structure various gradational process which give rise to what is a net sequential landform. तो एक बढ़ाने वाला होगा endogenetic gradational और एक तोड़ने वाला होगा degradational. Yes or not? So the gradational processes works. If the rocks are folded, याद है faulted and all. If the rocks are folded, they are more resistant to weathering and erosion because the molecular strength due to compression and cementing is high. Is this clear? Compressional force make it what? Molecular space hard and cemented. Next, the rocks which have fractures, याद है? Fractures, crack, joints, rifts, fissures, etc. are more prone to erosion because they become permeable and water can seep through them easily. और एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं? They can do weathering like hydration. They can do weathering like hydration, solution, hydrolysis, and carbonation and oxidation. Yes or not? Thereafter I said that normally less
resistant rocks are more rapidly eroded. What is the meaning of it? Soft, hardening. Which rock? Soft rocks are. Normally less resistant rocks are more rapidly eroded and give birth to the lowland. Yes or no? Lowland कौन देगा? Who will go convert into lowland? Less resistant rock जिसमें hardness नहीं होगी, less resistant होगी. And the resistant rock produce bold topography due to less erosion, and thus hardness plays an important role. And Aravalli, if I am talking about Aravalli, it has been first period, it is in 1800 million years ago it started formation, and then second phase of the formation of Aravalli is from the 1000 to 600 million years, and in that period the Aravalli has been formed, and after that there is an Aravalli is in the degradational process. और आप भी देख रहे हैं कि आज भी अरावली साउथ में क्या है? अरावली इज कमिंग फ्रॉम वेयर? दिल्ली. दिल्ली में आप नियर बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर देयर इज मजनू का टीला till Sirohi district in Rajasthan, and some parts goes into what is in a Banaskantha district of Gujarat. So how many states it is crossing? Delhi as an NCR, Haryana, then Rajasthan, and little bit in Gujarat. 3 states it is crossing and 1 NCR. Understood? Delhi. And then आप देखोगे कि it is existing since long. Aravalli in Delhi towards, I said that Rajasthan, Delhi, Haryana towards Rajasthan जब जा रहा है तो वहाँ पे more erosion हो चुका है. And if you go into the south, there is a what? Less comparatively, क्योंकि उसकी height grew thicker, you know that 1722 meter. So the Aravalli in, I said, if we'll talk about Aravalli in the form of hardness, if दिल्ली से आ रहा है तो इसकी हाइट क्या है? कम है, 200, 300, 400, 500. But when it started coming, it started increasing 500, and average height becomes 600, 700 like this. In the south it is what? It is showing that. So this portion is converting according to Davis. Davis ने बोला था कोई भी चीज प्लेन में कन्वर्ट होने लग जाए उसको क्या बोलते हैं? पेनी प्लेन. So he has given another word. Alfred Wegener ने कल कौन सा वर्ड दिया था? पेंजिया पेंतलासा. And then Mr. Davis has given the new word in the dictionary of geography, that is in a penny plane, and then yet upper part is converting into penny plane. So the Aravalli, most of the northern Aravalli is converting into penny plane, but the southern part is still showing the hilly structure. Southern whole Aravalli, कहीं-कहीं पे बच्चे क्या करते हैं? They are saying that Aravalli is showing a feature of penny plane. और यहाँ से आपके marks, यदि अच्छा जो एग्जामिनर चेक कर लिया, बच्चा अब वो भी क्या सोचते हैं? बच्चा वही पढ़ेगा जो टीचर बताएगा. Northern part of Aravalli, northern half of Aravalli, you can say, it is saying the what is in a which kind of penny plane, but the southern is in a hilly. Southern is in a what? Hilly. So समझ में आ गया? Then hardness rock will be showing the bold topography, and less hardness will convert into penny plane. In the permeable rock, water is able to hardness से density भी cover हो गया. Yes or not? And the rock massiveness, जितना ज़्यादा rock massive होगा उसको टूट कर आने में भी टाइम लगेगा. More rock massive, it will take time to what is converted into penny plane. In permeable rock, water is able to penetrate underground, and rocks become able to denudation with comparatively easy. तो उसमें denudation, what is the meaning of denudation? Sequential process of weathering, erosion and deposition. First day class, weathering, erosion and deposition. In permeable rock, water is able to penetrate underground and rocks become able to denudation with comparatively easy, but highly permeable rock disfavors erosion. जहाँ पे हाई परमेबल होगा तो वो क्या होगा? उसमें इरोजन एंड वेदरिंग बहुत कम होगा. And they allow more efficient percolation of water and hence form high relief topography. So which one will show high relief and lowland? Less permeable rock will convert into lowland, and high permeable rock will be remain high landform. So it is an हम लोग क्या बोल रहे हैं? Factors controlling the landform development. And then if water and then in some instances porosity can promote and enhance
permeability. जितना ज़्यादा porosity रहेगी, you know that permeability will be more. Porosity मतलब कोई hard rock में porosity होती है, softer rock में permeability होती है. Sedimentary rock will have a more fast recharge of underground water, or harder rock will have a fast recharge of underground water. Sedimentary because of permeability. But harder rock has suppose porosity. Harder rock में किसकी बात करेंगे हम? Porosity. If the harder rock has more porosity, like granitic rock, जब granitic rock जब solidified होने लगता है तो उसमें bubbles बनते हैं, and bubbles can create what? Porosity. Understood it? Or that can cause also, I said that, जो उंगलियां पकड़ के लटके रहते हैं, किस पे लटके रहते हैं कभी, और पिमुस स्टोन भी आपने देखा होगा घर में पैरों पे लगाने के लिए, उसी में से सम रॉक्स दैट ग्रेनाइटिक टाइप बेसाल्टिक निकलता है, तो उसमें समटाइम्स देयर इज अ सिलिका इज मोर. जब मैग्मा इरप्शन होता है तो उसमें से देखा होगा ना, व्हाइट कलर का क्या लगाते हो आप बाथरूम में? पिमुस स्टोन होता है ना, उसमें कैसी पोरोसिटी नजर आती है? पानी डालो नीचे से निकल जाएगा, व्हाइट कलर, हाईली पोरस. So sometimes I said that harder rock having the, ध्यान में रखिएगा, harder rock, softer rock में porosity नहीं होती है. Sedimentary rock, softer rocks is permeable rock. Understood it? So I said that porosity can promote and enhance permeability, and when the permeability has been enhanced, it will be remain high topography. Clear? So which are the factors we have seen? Fold, fault. Yes. तो ये fold बहुत ज़्यादा, but fault, fissure, crack, and then the joints, rift, they are more prone to weathering and convert into lowland. Understood? And fold is less prone to convert because of the cementing, compressional force. Is it clear? Then I come on to what is the which one I said? क्या था? Physical, and in the physical hardness. Hardness, like Harawli example, I said that hardness will make the higher topography, and less hardness will convert into peneplain. And then I talked about permeability, hardness and density उसी में cover हो गया, rock massiveness. And then I said that permeability and porosity. Permeability में क्या आपने देखा? If the more permeability remain high and less permeability convert into lowland. Porosity, if a rock is having more porosity, it will give a permeability of water, and then it will be what? Remain high. And then solubility, if the rock is having more solubility और soluble होगा तो वो भी जल्दी क्या होगा? Convert into lowland, and this kind of structure. Understood? Solubility. Next one, if I have to see that texture, ध्यान से. Suppose क्वार्ट्ज सैंड में टूटा. क्वार्ट्ज किस में टूटा? सैंड में. And if the sand has, this quartz has more iron, so what is the color of quartz? Red. So what is the color of sand? Red sand. And ये red sand compressional force में से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Red sandstone. किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और ये ज्यादा कन्वर्ट नहीं हुआ और ऐसे ही है कि इसके अंदर ये, और आप कैसा देख रहे हो? क्रिस्टल स्ट्रक्चर. और यदि इसमें से पानी चला गया तो पानी सस्टेन भी कर सकता है, और इसको क्या करेगा? तोड़ना स्टार्ट कर देगा. और क्ले सॉइल कैसे होते हैं? क्ले पार्टिकल्स. मैं अभी ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट की बात नहीं कर रहा हूं. दे आर लेस प्रोन. यस और नॉट? ग्रेनाइट इज लेस प्रोन. मैं अभी बोल रहा हूं कि टेक्सचर कोर्स हैज एन, टेक्सचर इज कोर्स. क्रिस्टलाइन नहीं बोल रहा हूं मैं. टेक्सचर इज ये पिक्चर आप बना देंगे. टेक्सचर इज कोर्स, देन इट कैन होल्ड water and other chemicals, and it will help in the more, I said that, weathering and erosion. But if the texture is very fine, then it does not leave intermolecular space. So there is no intermolecular space. If there is no intermolecular space, then the water and other chemicals cannot what? Go inside it.
Yes or not? And then it cannot be absorbed by it, so it will be less prone to weather. So coarser one will be more prone to weather and erosion, and then finer grained will be what? Finer grained will be less prone. Yes or not? लेकिन if I am coming for, क्योंकि इसमें स्पेस है, but if I am coming for granitic rock, and granitic rock is in a coarser, and especially coarser means crystalline, and the crystalline is like this. And but if the crystalline is like this, crystalline rock does not leave any air space. It is also coarser, and therefore, and they are well, it is a try to what? Join together very hard. They are trying to join together, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे? पकड़ के रखेंगे this way. So therefore, granitic rock is crystalline and very hard. And on the other side, basaltic rock, जिसमें पार्टिकल्स क्या हैं? वेरी स्मॉल. इसमें कंपैरेटिवली रेनफॉल ये इसको तोड़ सकता है, लेकिन इसको तोड़ नहीं सकता. इट विल बी फास्टर, इट विल बी कंपैरेटिवली स्लोअर, क्योंकि ये फाइनर पार्टिकल्स है. द ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया इज विच काइंड ऑफ सॉइल? फाइनर. ये फाइन ग्रेन्ड, और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये वो कोर्सर पार्टिकल जिसमें क्या रहेगा? एयर स्पेस. अंडरस्टूड? And granitic is also coarser but crystalline, but there is no air space. तो ये तो जमीन के अंदर बन गया ऐसा granite. So the granitic rock is very hard resistant rock. Understood? लेकिन हमने क्या बोला? Coarser. The regards to a texture. First we am talking about texture. If the coarser grained rock can weather more quickly than a fine grained rock, as the latter possesses better interlocking structure between their crystals. तो ये आपस में क्या बनाएंगे? Finer one will make a more interlocking structure छोटे में. लेकिन ग्रेनाइट रॉक क्यों बना रहा है बेटर इंटरलॉकिंग? ये भी कोर्स है, बट दिस कोर्स इज नॉट एबल टू मेक इंटरलॉकिंग. दिस कोर्स इज मेड ऑलरेडी इंटरलॉक. यस, इसमें एयर स्पेस इज देयर, देयरफॉर इट इज नॉट इंटरलॉक एंड इट इज एन इंटरलॉक, सो इट इज एन हार्ड. एंड यहां पर फाइनल लॉक इज व्हाट इज एन सोइंग, आपस में एक इंटरलॉकिंग शो कर रहे हैं, पकड़ बना रखे. इसीलिए बोला जाता है कॉटन सॉइल इज इन विच इट इज कैन बी ग्रोन बेटर. Clay, because it does not allow the water to go down. तो less rainfall. Cotton कैसे